Yes, interrupt for 1 minute because we are going forward. So there are questions from the previous slides. So can I ask you some of people have written? That is, first question is, what is the basic difference among ethnography, phenomenology, and grounded research? This is one of the participants. So if you can, Dr. Muhammad, I can't see the name properly. So Dr. Muhammad Nadeem has asked this question. So please answer. The basic in ethnographic study, we explore specifically the specific culture. आप किसी भी एक स्पेसिफिक कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को, उनके बिलीव्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप उसको एथनोग्राफिक स्टडी का नाम देते हैं. लेकिन फिनोमिनोलॉजी में आप कोई भी एक फिनोमेना, कोई भी एक प्रॉब्लम जो ट्रेंड में है, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं. एथनोग्राफी एक रिच कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे नोमेड्स का है, उनकी अपनी मूविंग स्टाइल है, उनका अपना अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो चेंज कर लेती हैं, अपनी रेजिडेंसी चेंज कर लेते हैं, तो उनका अपना एक वेयरिंग स्टाइल है, अपना एक लाइफ को स्पेंड करने का स्टाइल है. तो जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एथनोग्राफिक. लेकिन फिनोमिनोलॉजी जो है, फिनोमिनोलॉजी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक इशू को लेके, फिनोमिना को लेके आप उसको लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो उनके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको वो लेते हैं. लेकिन और जो ग्राउंडेड थ्योरी है, जैसे मैंने बताया, ग्राउंडेड थ्योरी का जो बेसिक पर्पस होता है, ये डेटा से इंड्यूस करता है. लेकिन आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसी एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं, आप उसमें उसको नहीं करते कि मैंने 5 लोगों से इंटरव्यू लेना है, आई विल टेक इंटरव्यूज फ्रॉम द 10 पर्सन्स. आप डेटा कलेक्ट करते हैं. आप फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यू पॉइंट मिल जाता है, अगेन यू डेवलप द न्यू क्वेश्चंस और प्रॉबिंग क्वेश्चंस. आप अगेन यू डू अ क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट अंटिल आपके पास सेम इंफॉर्मेशन सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, और एक आपके डाटा से, ये इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हैं, आपके डाटा से एक न्यू थ्योरी जनरेट हो जाए. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 रिसर्च डिजाइंस. एथनोग्राफी फोकस ऑन कल्चर, फिनोमिनोलॉजी लिव्ड एक्सपीरियंसेस को फोकस करता है, और ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो न्यू थ्योरी जनरेशन पे बिलीव करती है. जी सर. There are, I think, 2 more questions from Dr. Muhammad Nadeem. So I'm asking Dr. Muhammad Nadeem to unmute himself and ask further questions he has. Dr. Muhammad Nadeem, you can unmute yourself, please. Well, thank you very much. Dr. Fasiha, you are going well and explaining the things very efficiently. Actually, I am a little bit confused about the grounded theory. While conducting ethnography, actually we are immerse ourselves in related culture. So what do you think actually we are at that time, while we are there, we are doing something actually that is, I think, that is also called a grounded theory. Why it is separated from ethnographic or phenomenology? Sir, let me clear you one thing. जो ग्राउंडेड थ्योरी है, दिस इज आल्सो अ वन डाटा कलेक्शन टू. आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी में आप डाटा कलेक्शन एज अ अप्रोच भी यूज करते हैं. यानी कि आपका रिसर्च डिजाइन जो है, दैट कुड बी द एथनोग्राफिक, आप उसके कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन जो आप डाटा कलेक्शन टेक्निक यूज कर रहे हो, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी. Okay. I understand. Thank you. It's actually narrative and grounded theory you can use as a data collection technique. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. And so केस स्टडी मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन भी किया था कि आप एथनोग्राफिक में एज अ केस स्टडी भी ले सकते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक कल्चर को आप एज अ केस ले रहे हैं. Then why we used it as a separate research paradigm, grounded theory or research paradigm? सर, जैसे मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था, इसको अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यू, क्योंकि ये डाटा से प्रोड्यूस होता है ना, डाटा इंड्यूसिव
इंडक्टिव से है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। आपके जो वाइल कलेक्टिंग द डाटा एक न्यू थ्योरी जनरेशन को जो है फिर हम इसको एज अ जो है स्पेसिफिक जो है वो मेथड के तौर पे भी अप्लाई करते हैं। आप एक न्यू Thank थ्योरी। you very much. Thank you very much. Thank you. वेलकम सर। You move on. So you had more questions also. You were asking about data collection while conducting ethnographic research. We had point in time also using grounded theory, and then you had a question, narration can be used as a source of data for historical research. So you can elaborate on these questions also. Dr. Muhammad Nadeem, you can unmute yourself. Sorry. Actually, she explained the previous two questions, and I think it's okay. No need to explain more. All right. So thank you very much. I think there are no more questions, or do we have some more questions? All right. So thank you very much, Dr. Fasiha. You can. Thank you so much. I hope कि आपको आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का. Thank you so much. But the questions that were really interesting. Thank you so much. Now we have a types of qualitative data. कि हमारे पास किस तरह का qualitative data we can collect. We can have structured form में आपको stories हैं, surveys हैं, आपको comments हैं, news articles हैं, books में से अगर आपको कोई new information मिल सकती है, that could be a part of qualitative data. Then we have the transcript interviews, unstructured form, focus group interviews and conversations, audio recordings, music, video recordings, graphs, pictures, all these are different types of qualitative data. Okay. So qualitative data में आपके पास सबसे जो हम different techniques use करते हैं, especially in a qualitative research. First we have the observations. के researcher, we don't rely on a single data techniques in a qualitative research. So we do observations of our participants कि हाँ वो किस जो वो कह रहे हैं either in actual they are doing or either कि वो इस तरह की ही लाइफ गुजार रहे हैं कि नहीं. तो being a qualitative researcher we become the part of that research. Qualitative का जो है as a emic role होता है. Qualitative researcher become a part of that particular problem or a particular situation. तो हम observations करते हैं. This is one of a very important tool of a data collection. Then we have interviews. Interviews this involve asking question, listening and recording answers from individual groups. आपके हम ज़्यादा semi structured और in depth interviews करते हैं qualitative research में, और at the time or at spot अगर हमें specific information नहीं मिल रही तो you can change the structure of a sentence के एक अच्छे qualitative researcher की सबसे बड़ी quality ही यही होती है कि वो अपने participant से actual information जो है वो ले और अपने इंटरव्यू से कि वो अपने इंटरव्यू का जो है वो स्ट्रेटेजी इस तरह से चेंज कर ले कि वो जो पार्टिसिपेंट है उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे. देन वी हैव द focus group discussions. In a focus group discussion is also another type of interviews, but in a focus group discussions at a time we have more than 6 to 8 participants minimum. आप इंटरव्यू करते हैं from a group of people. So इस तरह से the one positive point of ग्रुप डिस्कशन इज दैट कि आपके पास लोग शाय फील नहीं करते. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नोमेड्स का इंटरव्यू किया था, दे वर नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली फीमेल्स, दे वर नॉट कंफर्टेबल कि मुझे 1-to-1 इंटरव्यू दें. तो फिर मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशंस, आई यूज दैट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग अ डाटा कि फिर वो आपस में दे वर कंफर्टेबल, they were sharing problem with me in a more comfortable way as comparatively 1-to-1 interview. तो फिर आपके पास जैसे आप स्टूडेंट से ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स में भी ग्रुप में ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें और आपको ज्यादा इन डेप्थ जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए. Then we have the content analysis. Content analysis contain any official documents, आपके assignments, आपके presentations, articles, magazines और कोई government का official documents है. All these documents could be a part of content analysis. Here I want to clear one thing. Content analysis we can use in a quantitative researches as well. लेकिन हम इसको qualitative research में as a evidence देते हैं कि क्या उसमें हम cross check करते हैं, और content analysis is one of the major key to collect the data.
सो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हमारे किस तरह से होने चाहिए, क्वालिटेटिव आप किन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं while collecting the qualitative data. We believed on experiences. When you told your manager that the project has failed, what happened? आपका actually qualitative research is a problem solving research, कि हमने एक प्रॉब्लम को लिया, हम उसको इन डेप्थ देख रहे हैं, तो हम आपका हमारा फोकस होता है हाउ एंड व्हाई पे, कि what happened, ऐसा क्या हुआ, what was the reasons of the failure, then opinion of the people, कि how the people think, then feelings of the people are either the people they were in a favor, और क्या उनकी क्या साइकोलॉजिकल तो नहीं उनको कोई इश्यू हो रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, उनके गेस्चर्स कैसे थे, ये सब वाइल आप जब भी डाटा कलेक्ट करें क्वालिटेटिव में, आप उनको मेमोस या डायरी की शक्ल में या ऑब्जर्वेशन या फील्ड नोट्स की शक्ल में आप ये उनके नोट डाउन करते हैं. Then the knowledge, then input, what you have, lectures on availability, all these are the focus questions on a qualitative research जो हम अपने पार्टिसिपेंट से करते हैं. फिर इसके बाद पेन आप जब प्रिपेयर कर लेते हैं, हम कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने इंटरव्यू लिया, आप at that time you can record the interviews, and after when you have that particular recording, आप उसको word to word transcribe करें. But in a qualitative researcher we use verbatim too. Verbatims आप उनकी लैंग्वेज में, जैसे जब मैंने इंटरव्यू उनसे किया था, they were more comfortable in पंजाबी लैंग्वेज, तो मैंने उसको अपने आर्टिकल्स में कोट भी किया था इन अ शेप ऑफ वर्बैटम, लेकिन फिर उसको मैंने साथ साथ ट्रांसलेट किया था फॉर माय रीडर्स. देन कंसीडर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस. क्वालिटेटिव रिसर्चर शुड बी अ गुड राइटर टू, कि आप जब डाटा को एनालिसिस करें तो आप साथ साथ उनके गेस्चर्स भी दें, कि उनके क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह से वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे थे. Then we try to do the transcribing yourself without biasness. आप as it is, you being a researcher transcribe करें situation को, and definitely it's a time consuming activity. Qualitative research, this is one of the, you can say that drawback of a qualitative research के time consuming है, हमें काफी ज्यादा टाइम खुद बीइंग अ रिसर्चर देना पड़ता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. आफ्टर आप जैसे अब हमने शेयर डिस्कस किया था, लेट मी रिवाइज ऑल दोस पॉइंट्स, कि हमने डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से यूज किए थे, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशंस एंड द कंटेंट एनालिसिस. फिर उसमें जो है डिफरेंट हमारे पास कंटेंट एनालिसिस में कैटेगरीज थी. ऑल दिस वर द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, कि क्वालिटेटिव डाटा किस तरह का हो सकता है हमारे पास. देन लेट्स कम टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस. वंस हमने डिजाइन लिया, हमने एक टॉपिक स्पेसिफिक सजेस्ट किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर डिजाइन either the ethnographic is suitable according to my research problem or the phenomenology or the case study decided. फिर उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन टेक्निक्स अप्लाई की, कि from which technique you can take the data more in depth, more in a more good or in a actual sitting. Then let's come to the data analysis, कि डाटा को एनालिसिस कैसे करना है हमने, because we are not using any software कि जैसे स्पेसेस में आपने पुट किया डाटा और आपके पास you have the numbers और आपने different mean mode आपके पास आ गया, standard deviations. We have the different story, we have the data in a narrative form. तो अभी हम शेयर करते हैं कि हम उस डाटा के साथ क्या करते हैं. क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर where we understand and interpret and analyze the data. कि we first of all we understand the data, कि actual में हमारे पास ये डाटा जो है वो किस नौयत का आया है, हम उसको इंटरप्रिटेशंस करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि आपको वर्ड टू वर्ड उनको आपने आफ्टर लिसनिंग दैट इंटरव्यूज आपने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया, एंड देन एट द एंड आप एनालाइज करते हो. आप एनालाइज कैसे करते हैं कि आप कोडिंग, आप उनको कोड करते हो. मेमिंग, आप वो ड्यूरिंग द फील्ड नोट्स आप जो फील्ड बनाते हो, जो मेमोस बनाते हो, यू कैन यूज इन अ डाटा. एंड डिस्क्रिप्शन आर मोस्ट ट्रिकिंग एंड सिग्निफिकेंट स्टेप्स involved in qualitative data analysis for organize and making sense of textual from data. आप उसको narrative form में लेके आते हो, एक meaningful form में लेके आते हैं.
डाटा कलेक्शन जो अप्रोच है ये इंड्यूसिव अप्रोच है, यूज व्हेन क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेजर डिजाइन ऑफ द इंक्वायरी, और using emergent framework to group the data and then look for the relationship। आप क्योंकि क्वालिटेटिव जो है वो इंडक्टिव अप्रोच पे है, हम डाटा को जो है मोर इन डेप्थ वे में एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट अ सुपरफिशियल रिसर्च कि आपको बस लोगों ने क्वेश्चन टिक मार्क कर दिया और आपने उसकी बेसिस पे यू अप्लाई द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, बट हियर we have the in-depth data, we have the people point of view, we have the evidences, we induce, हमारे पास डाटा जो है जो फाइंडिंग्स जो है उस डाटा से हम इंड्यूस करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच है। इसमें हमारे पास किस तरह का हमारे पास जो है वो डाटा आता है, कंटेंट एनालिसिस का, नैरेटिव एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वी हैव द डिस्कोर्स एनालिसिस, फ्रेमवर्क एनालिसिस एंड अगेन द ग्राउंडेड थ्योरी। नैरेटिव एनालिसिस में हमारे पास आर ट्रांसक्राइब एक्सपीरियंसेस, इस तरह से हमने उसकी डिजाइन में यूज किया था, इस तरह से हम उसको नरेशन को एनालिसिस कैसे करते हैं कि हमारे पास वी हैव इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, narrative aspect, the researcher has to sort out and reflect upon them, enhance them and present them in a revised shape to the reader। आप जब रीडर को ऐसा ही आपके पास being a good qualitative researcher, when the reader read out your articles और आपका जो भी written form में हो तो उसको ऐसे ही लगे जैसे वो एक अच्छे स्टोरी राइटर या नॉवेलिस्ट का पढ़ रहा है, और रीडर को ऐसे ही लगे कि एक्चुअल सिटिंग में all these things are happening। The core activity in narrative analysis is to reformulate stories presented by people in different contexts based on their different experiences। Then we have the discourse analysis। Discourse analysis especially हम English language teaching में या linguistics में आप use करते हो, different speeches को आप use करते हो, उसके लिए different scales use करते हैं, और हम this is also one part of the qualitative research data analysis technique। This is discourse analysis कि आप लोगों की speeches को analyze करते हैं language के context में। Then we have the framework analysis। अब फ्रेमवर्क एनालिसिस ये है कि आपने जस्ट लाइक द कोडिंग, आपने उसको कोड किया, ट्रांसक्राइब एंड रीड आउट द डाटा फर्स्ट, आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, थीम्स को, कोड्स को उनके अंदर आइडेंटिफाई किया, यूजिंग न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल कोड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा which correspond to different themes। आपके कोड्स दैट स्पेसिफिक कोड्स represents that themes, और फिर जब वो थीम्स और कोड को आप चार्ट की फॉर्म में मैप बना के या इंटरेक्शन या इस तरह से मैपिंग में, जैसे हमें एनवीवो सॉफ्टवेयर देता है, तो आप एक फ्रेमवर्क एनालिसिस आपका जनरेट हो जाता है कि आप एक चीज को, आप एक बिगर पिक्चर को कंसाइज फॉर्म में जो है वो लेके आ जाते हैं इन अ फ्रेमवर्क एनालिसिस। देन वी हैव अ ग्राउंडेड थ्योरी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में ये बात डिस्कस भी की थी कि द रिसर्च डिजाइन वाज एथनोग्राफिक, लेकिन आप उसके अंदर डाटा कलेक्शन जो टेक्निक यूज कर रहे हो दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी, और उसका यही पर्पस था कि आप एक इन डेप्थ जो है वो इंफॉर्मेशन लें और आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनालाइजिंग ऑब्जर्वेशंस, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप विच टेक्निक्स यू कैन यूज फॉर ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले तो वो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए ओवर टाइम टू टेल द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, उसमें कोई गैप्स ना हो आपके ऑब्जर्वेशंस में, आपकी एक हायरार्की हो कि बिगिनिंग में क्या हुआ था, फिर एंड पे किस तरह से इवेंट हैपन हुआ। Key event describing critical incidents or a major events, not necessarily in order of occurrence but in order of importance। फिर various sittings हैं, describe various places, sites, sittings, location in which event or behavior of interest happen। The event, that particular space, that particular region, location counts a lot in observation, क्योंकि सब जगह का कंफर्टेबल जोन सेम नहीं होता। People are facing different problems। For example, in my PhD thesis, when I conducted research on national professional standards, मेरे जो I used the multiple case study design। कुछ मेरे केसेस लाहौर से थे और कुछ मेरे केसेस साउदर्न पंजाब से थे। डेफिनेटली वो जो है उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वर सेम, स्कूल वर सेम, but the culture, the environment, the region, that was totally different। In my observation
ऑब्जर्वेशन उसमें चेंजेस आई थी। तो आपकी जो है सिटिंग जो है उसमें काउंट बहुत करती है, और आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इससे डिफरेंसेस आते हैं। देन पीपल डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल और ग्रुप इन्वॉल्व इन द इवेंट, आप definitely the people the teachers who are teaching in Lahore region, or the teacher who are teaching in southern Punjab or somewhere else, definitely they have the different environment, they are facing different problems, different cultural issue। उसमें एक ये भी इशू था ये जो साउदर्न पंजाब के स्कूल थे कि जो स्टूडेंट्स थे वो जैसे वीट का सीजन है, हार्वेस्टिंग का सीजन है, जो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो जाता है। बट इन लाहौर द सिनेरियो दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो आपका जो कल्चर है वो भी इस पे इफेक्ट कर रहा है, और आप अपनी ऑब्जर्वेशंस में उन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। फिर देन विद द प्रोसेस डिस्क्राइबिंग इंपॉर्टेंस प्रोसेस, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये आप अपने ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में यू कैन मेंशन all these things। and issue eliminating key issues, how did participant change, this is also one of the biggest hurdle in a qualitative research। For example, in 2017 when I did research on nomads, तो जब मैंने उनसे participants से I took time from them, the female they were agree, लेकिन at the on the spot उन्होंने फिर जब next day according to commitment they denied कि we are not willing for interview। हमारे जो हैं qualitative researchers की जो these are basically the limitations in a qualitative research, or these limitations are not under the control of being a researcher। हमारे कंट्रोल में वो नहीं होती कि आप पार्टिसिपेंट समटाइम आपको इंटरव्यू का टाइम बहुत लेट मिलता है, समटाइम द टीचर दे आर नॉट कंफर्टेबल कि आप उनको ऑब्जर्व करें, समटाइम द हाई अथॉरिटीज और द पीपल दे आर नॉट विलिंग टू शेयर विद यू देयर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। So conducting qualitative research is not an easy task, it is really difficult, but it's इसकी फाइंडिंग्स ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा रियलिटी के करीब हैं, और आपको ज़्यादा एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। Then we have the content analysis. Again, in a content analysis is the procedure for categorization of verbal behavior data for the purpose of classification, summarization and tabulation। आपके पास डाटा जो है वो किसी भी कंटेंट फॉर्म में हो सकता है, आपके पास जैसे रजिस्टर्ड स्कूल में होते हैं, जैसे असाइनमेंट्स हैं बच्चों की, जैसे कोई भी आप केस अगर कर रहे हो तो गवर्नमेंट में कोई भी एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो सकता है। हम एनालिसिस को करते कैसे हैं, इसको लेट मी क्लियर यू इन अ वन स्पाइरल फॉर्म। क्या आप पहले जनरेट रॉ डाटा, यू हैव इंटरव्यू इन अ रॉ फॉर्म, देन यू कैन ऑर्गेनाइज द डाटा। क्या पार्टिसिपेंट के डाटा को आप रिटन फॉर्म में लेके आओ, आप उसको ऑर्गेनाइज करो, देन आप रीड आउट करो और उसके अंदर से सेंस जनरेट करो, कोडिंग करो, देन वी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक थीम्स एंड बिहेवियर्स according to that specific data। फिर हम उन themes उन कोड्स के बेस पे फाइनल हम themes को एक specific category को लेके आए, और then at the end you can interpret the data। This is according to the Creswell book in that book was published in 2009। Here you can see the process of the data collection that is in a spiral form, managing data and then file or organize the data, and then reading memos are those handouts or those notes you being a researcher took in a field जब आपने अपनी इंटरव्यूज किए थे, और फिर वो नोट्स आपके रिफ्लेक्ट करते हैं, देन डेफिनेटली एट द एंड आप उस डाटा को इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रिटेशंस के बाद आपकी कैटेगरीज और थीम जनरेट्स होते हैं, और फिर आप उसको फाइनली एट द एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में लेके आते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो। Again, what is coding? I have used the coding word in a qualitative data analysis many times. Now let me clear you basically code है क्या? Coding is a process of reducing a large number of data into a smaller groups or a manageable। आप कोई भी phrase words आप जो यूज करते हो आप उसको codes के नाम दे देते हैं, और हम codes basically करते कैसे हैं? Let me share with you this slide। When you move into your own home, you are alone. There is no bustle of people around the house. This is one
नरेटिव फॉर्म, कि आपके पास एक नरेटिव फॉर्म में आपने इंटरव्यूज को कर लिया या स्टोरी है, तो आप इसको कोड कैसे करोगे? ये जैसे आपके पास एक स्टोरी फॉर्म में आ गया, इसके बाद आपने सबसे पहले फ्री कोडिंग की, आपने अंडरलाइन किया कि फर्स्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, व्हेन यू मूव इनटू योर ओन होम यू आर अलोन, तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है लॉनलीनेस को। डेफिनेटली इसके फिर आपसे आप हर वर्ड के अंदर कोई भी मीनिंग क्लोजेस और आप ले आते हो, और वो क्लोजेस आपके आप फ्री कोडिंग कर रहे होते हो, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा होता है आप उसको अंडरलाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग में जैसे ओपन कोडिंग, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इस डायग्राम में कि आप उस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को ले लेते हैं और आप उनको कोड के फॉर्म में ले आते हैं। देन ओपन कोडिंग के बाद आपके पास एक्सेल कोडिंग आ जाती है, क्रिएट themes and categories by grouping codes or label given to words and phrases. This हमारे पास two types हैं, hierarchical and non-hierarchical. This is a one type of Excel coding. हिरारिकल क्या है हमारे पास? आपकी एक हिरारिकल है, हिरारकी है बिटवीन सम कोड, जैसे ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। दिस इज वन थिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब ये कोडिंग से हिरारकी कैसे है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपकी फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, योर कोलीग्स, योर सिबलिंग्स, योर स्पाउस, पार्टनर, सारा क्या है, एक हिरारकी में है, और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। आपके रिलेशनशिप के वन मेजर जो है वो कोड में वन मेजर थीम के अंदर आ जाता है ये सारे कोड्स। देन वी हैव द नॉन हिरारिकल कोड्स, फॉर एग्जांपल द एडल्ट taking a break from work, they have different activities, they have different habits. For example, किसी को बुक रीडिंग अच्छा लगता है, someone is liking watching movies, someone liking hanging out with friends, taking a nap, or whatever the hobby they have. अब उनकी सारी जो है हम उसको अलग से सारे कोर्स will becomes under one theme of adults habits or adult taking a break from a work. इस तरह के उनके पास हमारे पास बातें हैं। अब हम जब ये कोर्स हमारे पास आ जाते हैं तो वो किस तरह से थीम बनते हैं? A major steps in analyzing qualitative data is coding speech word into a meaningful categories or a theme. हम उन थीम्स को, स्टोरीज को, उन कोड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में, मीनिंगफुल फ्रेज में लेके आते हैं। As you read and reread through the data, you can compile the data into categories or themes. जैसे for example, here is one example of coding. आपके पास different आप डाटा को different colors में दे देते हो, जैसे जो यहाँ पे रेड कलर, उसके जितनी भी उसकी क्रेडेंशियल्स हैं that represents in a red colors, ब्लू कलर्स उसे रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी उसके सेल्फ डाउट्स हैं, और ग्रीन कलर उसके जो है आइडेंटिफाई एट वर्क, शिफ्ट इन कंट्रोल। तो आप उनको डिफरेंट कलर्स से देते हैं, उन कलर्स को फिर आप दैट सैंपल हेल्प यू हाउ यू कैन गिव डिफरेंट कोड्स टू योर डाटा, और वो कोड स्पेसिफिक थीम्स में फाइनली इमर्ज हो जाते हैं। आपके पास 4 बेसिक स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में। वन इज रॉ, आपके पास यू हैव द डाटा इन अ रॉ फॉर्म, यू हैव इंटरव्यूज, यू हैव ऑब्जर्वेशंस, नोट्स की शक्ल में है, आपके पास इंटरव्यूज ट्रांसक्रिप्शन की शक्ल में है। आप रॉ डाटा को सबसे पहले क्लीन आउट करते हो, मैनेज करते हो। देन वी हैव डाटा रिडक्शन, चंकिंग एंड कोडिंग। आप उनको जिस तरह से मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में शो किया, आप उनको डिफरेंट जो है वो फ्रेजेस फॉर्म में ले आते हो। देन वी डाटा इंटरप्रिटेशन, आप कोड्स को क्लस्टर, जैसा हमने हिरारिकल और नॉन हिरारिकल मैंने आपसे कोडिंग शेयर की, इस तरह से आप उनको थीम्स और कैटेगरीज में ले आते हो। डाटा रिप्रेजेंटेशन, फाइनली आपके पास एक मेजर थीम रिलेशनशिप आ गया, और उसके अंडर फिर आप बीइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्चर आप नरेटिव फॉर्म में लिखते हो कि लोग किस तरह से उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, और व्हाटएवर द प्रॉब्लम दे हैव। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट और एस्पेक्ट while collecting the data is memoing, कि आप उसको मेमोस की शक्ल में जरूर लिखें, क्योंकि being a human हम चीजें भूल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास नोट्स की
शक्ल में है, तो these notes, these memos help you out to analyze data. ये आपकी qualitative data की essence है, इसकी beauty है कि आप किस तरह से आप उसको use करते हो memos को. Might be आप किसी का gestures उसको note कर लें. For example, when I took interview from a school heads, the female especially, they were not cooperating on. She was denying me to share the document, or her body language that was not good, her gestures. So मैंने अपने memos में I write it down और मैंने बड़ी ही polite way में उसको interpret किया अपने data को. तो वो आपकी क्या होता है, उसकी beauty में उसके जो actual essence है qualitative research का, उसको represent करता है, और memos आपके इसमें help out करते हैं. Then we have the description help in the data, contextualization. It should record detailed description of the settings, interactions, observations over a specific period of time during the course of studies. कि आप किस तरह से describe कर रहे हो चीजों को. Types of descriptions किस तरह की हैं हमारे पास, आपके पास thin descriptions है और thick descriptions है. In thin descriptions आप इंफॉर्मेशन ज्यादा इन डेप्थ नहीं शेयर करते, आप उसको माइनर चंक फॉर्म में शेयर करते हैं. बट इन अ थिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कॉन्सेप्ट. आप उसको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन. Anna is between 30 and 40. You are writing down her age, her brown hair lies limp and greasy against her head. आप उसकी beauty को जो है वो write down कर रहे हो. Her eye tend not to focus on anything. Her skin is reddened with. अब आप क्या है उसकी descriptions दे रहे हो being a female, उसकी figure की, उसकी beauty की, और उसकी किस तरह से आप थिक डिस्क्रिप्शन में चीजों को ज्यादा डिटेल और इन डेप्थ वे में देते हैं. देन वी हैव द थिन डिस्क्रिप्शन and provide less detail. For instance, Anna has brown hair and is in her 30s. अब वो उसकी whatever the height she is, whatever the eye color she has, हमें नहीं पता. We only know about her hair color and her age. और might be वो 30s में है तो might be वो 37 की हो, might be she could be 32 year old. हमें exactly नहीं पता, लेकिन आपको thick description में आप exactly वो figure out वो देते हैं. अब अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है. द फील्ड वर्क इज ओवर. यू हैव द डेटा. आपने उसको अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ डेटा एज अ होल. आपके पास जो चंक में इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज हैं, डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप अंडर वन कैटेगरी उसको लेके आते हैं और आप डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, फॉर एग्जांपल in a government secondary school, let me give you one example. The 5 teachers, the mathematics teachers, they were practicing the assessment standard in a classroom, और उसके according to student को assess कर रही थी. But on the other hand, the teacher of in section B, she was not following that standards. तो आप क्या होता है कि आप उन सब डेटा को जो आपके पास डिफरेंट सेक्शन का, डिफरेंट लोगों का होता है, उसको एज अ होल रिप्रेजेंट करते हो, फिर आप उसको सेपरेटली नहीं देते. Researchers start with a large set of data and seek to narrow into a small group of a key data. This is very difficult in a qualitative research. आप large data को आप उसको narrow down करना. आपने एक small topic से start किया, but you have the data in bulk, and after some time it is very difficult for the researcher to narrow down the data. So this is also one of the very difficult stage for the researcher. लेकिन वहाँ पे आपको themes basic help करते हैं. आप specific उस theme पे अपना लें और उसके according सिर्फ उस एक चीज को explain करें जो आपके, और वो theme आपकी let me tell you one thing, let me share with you कि आपके theme pre-decided भी हो सकते हैं from your literature. कि आप रिसर्चर, आप स्पेसिफिक लिटरेचर को ऑलरेडी आपके पास वो जो थ्योरी है या जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आप उस चीज से लेके उसको प्री डिटरमिन्ड थीम बना लें और उसके ऊपर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को कोड करें. ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल बाय स्टेप, ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल इंटरव्यूज, ऑल फील्ड नोट्स आपने उसके अंदर मेंशन करने होते हैं इन डाटा एनालिसिस.
आप interpretation or analysis of qualitative data simultaneously occurs. आप being a good qualitative researcher, आप साथ साथ data analysis करें. This would be a very good strategy for yourself. Otherwise, with the passage of time, हम चीजों को भूल जाते हैं और उससे interpretation नहीं कर सकते. This is not, again keep in mind, this is not a quantitative research where you have data in numbers और आप बस अपने software में entered करना है और data analysis हो जाना है. This is not the case. आपको साथ साथ represent करेंगे, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकेंगे. Researchers interpret the data as they read and reread the data, categorize and quote the data, and inductively develop a thematic analysis. We use the thematic analysis approach in a qualitative data. Themes become the story or that narrative. जैसे for example हमने financial problems हैं, तो हम उस एक theme के अंदर लोगों की all over nowadays the people they are facing that problem, आप उसको mention कर सकते हो. जैसे marital problems हैं, जैसे interpersonal relationship है, these are the themes, or under that specific themes आप एक उसको narrative form में लिख सकते हैं. Qualitative data की representations में story में आप narrative हो सकते हैं, chronological form में flashbacks आप use कर सकते हैं, thematics use figure, tables, you can use all these things in a qualitative data analysis. But again, here we have the different softwares. In my PhD research, I used NVivo softwares. That software quite helpful for me. लेकिन again, tell me one thing, आपको qualitative, आपको जो है NVivo data को organize करके दे देता है, NVivo आपको codes दे देगा, लेकिन being a qualitative researcher, you have to interpret by your own self. Even after using that software too, आपको उसको interpretations narrative form में खुद चीजों को interpret करना है. Then we let me discuss one very important aspect in qualitative research. This is the trustworthiness. Most of the people they claimed qualitative research में there is no concept of reliability and validity, but the qualitative data can be reliable too. We use the terms trustworthiness कि हम reliability की और validity की बजाय हम trustworthiness का word हम use करते हैं. We justify our data through trustworthiness. Trustworthiness में हम उसके 4 जो criteria हैं हमारे पास. The first one is credibility in performance to internal validity, क्योंकि हम data, we collect the data for a prolonged time period. We don't get the data in a 1 or 2 single days. We spent months or many weeks to collect the data. So the credibility ensure the internal validity कि वो data valid है. Then transferability or the generalizability. The people they do a big questions on a qualitative research कि generalizability है. Yes, to some extent I do agree, but through for example, अगर मैंने एक रिसर्च क्वालिटेटिव डिजाइंस केस स्टडी डिजाइन किया है इन पंजाब यूनिवर्सिटी और दैट और सिचुएशन कुड बी द सेम इन LC लाहौर कली वुमेन यूनिवर्सिटी और कनेड कॉलेज, तो क्या मैं उनके आई कैन यूज्ड for a limited time period at a limited scale, I can use the finding of that case in that particular university too. तो आप इसको generalizability को to some extent you can justify, not as a whole. Then dependability in preference the reliability कि आप अपने data को जो है you can use that specific data or to somewhere else. Then confirmability कि आपकी जो objectivity है, क्योंकि हमारे पास data जो है वो एक prolonged time period के हम data को collect करते हैं और उसमें data जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में होता है और हम data को cross verify करते हैं from different for example, if I collected the data, I cross verify from one of my colleague from my co researcher के either इसमें कोई biasness का factor तो नहीं है, is there any biasness in my data, is there any for example being we are human, we can be biased. So आप इसमें justify कर सकते हैं. आप जब आप दूसरे को इसमें consult करते हैं तो आप इसके biasness के factor को भी overcome कर सकते हैं through confirmability. This means that confirmability, this means that the researcher must take step into demonstrate that finding emerging from the data, not from their own
लाइकनेस और डिसलाइकनेस के वो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड यू कैन एट दैट स्टेज यू कैन कंसल्ट विद योर फेलोज, और आप इसको को रिसर्चर का नाम दे सकते हैं, आपके सुपरवाइजर को, क्या आपकी जो थीम्स हैं क्या वो आपके डाटा को जस्टिफाई कर रही हैं या नहीं, कि उसमें बायसनेस का जो फैक्टर है वो तो नहीं कहीं आ गया, आप इसको चेक कर सकते हैं. देन आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, ट्रांसक्राइबिंग द डाटा, और आप इसको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी थ्रू ट्रस्टवर्दीनेस इंश्योर करने के बाद, नाउ लेट्स डिस्कस कि हम जो हैं किस तरह से क्वालिटेटिव जो है वो रिपोर्ट राइटिंग हम लिख सकते हैं. Writing a qualitative report, introduction, first of all, why? What is the reasons why you want to conduct the qualitative research? Why? So, if you want to explore the phenomena in depth, if you want to conduct your study in an actual setting, or if you have the topic कि आप किसी एक चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, उस पे अवेयरनेस लेना चाह रहे हो, तो एट दैट टाइम यू डिसाइडेड कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा रिसर्च अप्रोच और अ रिसर्च डिजाइन दैट इज मोर सुटेबल अकॉर्डिंग टू दैट research problems. Then you can identify the purpose of the study, brief description, आप एक justification देते हो कि how your study is suitable for that specific research designs. Literature view, in qualitative research we depend more on data collection as comparatively literature review, क्योंकि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपका डाटा इन डेप्थ होता है, तो rely more on data. Then method designs, which method is more suitable either or according to your topic, which method is more appropriate. Then we have the sampling. In qualitative research mostly we use the purposive sampling. The purposive sampling or a purposive sampling, because we in a purposive sampling we set the criteria कि हमें कौन से ऐसे लोग चाहिए, कितने उनके एक्सपीरियंस हो या किस फील्ड से वो रिलेटेड हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज द पर्पसिव सैम्पलिंग इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च और अ कन्वीनियंट बेस्ड सैम्पलिंग एज वेल, के बीइंग फॉर एग्जांपल मेरे लिए कहाँ से ज्यादा इजी है डाटा कलेक्ट करना, बीइंग अ फीमेल. अगर मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको डाटा कलेक्शन दिस नॉट फिजिबल फॉर you to collect the in-depth data, क्योंकि आपने डाटा सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं लेना. you have to spend a time. For example, अगर आप ethnography कर रहे हैं तो at least you have to spend months or a weeks in a particular culture. उसके बाद ही आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो आपको अपनी फिजिबिलिटी जरूर देखनी है while planning for a qualitative research. Then data collection method. Which data collection method? In data collections we have discussed different data collection techniques, in for example interviews, for example document analysis, for example observations. So at that time you used being a researcher decide which data collection technique is more suitable according to your research topic. And then most of the time, or around about 90%, we use the triangulation method in a data collection. Triangulation means when you use more than one resource for a data collection. For example, at the same time, if I am collecting the data from interviews, then I definitely will use the observations and the other data collection tool for triangulate my research. Then our results, presentation, interpretation relate to relevant conceptual framework. Relevant question frames means कि मेरे question, there should be one hierarchy between my research questions, objectives questions और मेरी findings में. क्या there should be a no factor of any biasness, और वो represent करें, address करें मेरे specific research objectives को, मेरी findings जो हैं वो. Then conclusion, key findings, logical steps, implications होनी चाहिए. There should be a logical, there should be one hierarchy between your objectives and your results and your findings, and then definitely it should be related with your recommendations. So here is a complete process of report writing in a qualitative, किस तरह से how you can report your in your dissertation or a thesis, even in your article. Thank you so much. And yes, question please. Right, thank you very much. So
Participants, if you have questions, so you can show me your hand so I can give you mic. So Dr. Sadia, can I unmute you? Where is Dr. Sadia? Dr. Sadia, you can unmute yourself and then you can ask questions. Thank you so much, sir. Well, first of all, Dr. Fasiha, I'm really thankful for you. You have given really a great presentation. But मैं यहाँ पे दो चीजें आपको clear करना चाहूँगी because I belong to the social sciences. I am from the Sin University. I'm associate professor over there. तो एक छोटी सी चीज आपने अभी term कही है because यहाँ पे कुछ और scholars भी होंगे जो ये बात सुन रहे होंगे. तो coming with this one कि आपने term use की है कि data is more important than literature. तो this is a humble request, please इसको बिल्कुल एक friendly रखिएगा क्योंकि हम सब researchers हैं ना, हम सब एक दूसरे को सिखाते हैं. मैं ये sessions इसलिए लेती हूँ ताकि हम एक दूसरे से सीखें. तो मेरा बच्चा सबसे पहले तो ये चीज आप रखिएगा कि देखें कोई भी रिसर्च विदाउट लिटरेचर नहीं है. मीन्स अगर आपको अपनी थीम, आपने अपनी थीम की बात की है कि आपने कोडिंग की, आपने अपनी थीम बना रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा एना कि आप ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात कर रही हैं, तो इस ब्यूटी के बारे में लिटरेचर ने कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा. ठीक है, तो जब आप डिस्कशंस लिखते हैं, जब आप फाइंडिंग्स लिखते हैं, तो उसमें लिटरेचर के बिना आप अपने डेटा को सपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक, ये चीज है. एक और चीज आपने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि आई बिलोंग टू द सोशल साइंसेज एंड मैं बिहेवियर्स पे मेरी अपनी थीसिस बिहेवियर्स पे थी, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च को मैंने अडॉप्ट नहीं किया था. एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू लर्न अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च. दैट इज कि आपने कहा कन्वीनियंट सैम्पलिंग. जस्ट वन थिंग कि पर्पसिव सैम्पलिंग तो समझ आता है. व्हेन वी गो फॉर द कन्वीनियंट सैम्पलिंग, can a private school principal the perceptions of any private school can give or can be considered for the development or for the goodwill, good means anything for the public schools. means अगर हम किसी government schools के बारे में बात कर रहे हैं और being convenient कि हम public schools पे नहीं जा सकते हैं या उनके principals पे नहीं बात कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग में. इफ वी इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आपका रिव्यू देखना चाहती हूँ मैं. जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जैसे लिटरेचर की आपने बात की, क्वालिटेटिव, आई वाज कंपेयरिंग बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव वन. क्वालिटेटिव नो डाउट में इम्पोर्टेंस जो है लिटरेचर की, आई कैन नॉट डिनाई कि हमारी डिस्कशंस में हमें हर चीज़ के लिए हमें जो अपने आर्गूमेंट्स को हम वी डू सपोर्ट विद द लिटरेचर. लेकिन मेरी उसमें सेंस ये थी कि समहाउ जैसे आपके पास एक न्यू इंफॉर्मेशन है व्हाइल कलेक्टिंग द डाटा, तो उसको आपको कोई एक स्टडी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट आपको लिटरेचर रिव्यू से नहीं मिलती, स्पेशली इन क्वालिटेटिव रिसर्च. तो उस सूरत में मैं ये कह रही थी कि डाटा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. बट at the same time I'm not denying the importance of literature के बगैर तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते. और मैम जो आपका सेकंड है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, मैं बीइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्चर मैंने कन्वीनियंट सैम्पलिंग, डेफिनेटली पर्पसिव सैम्पलिंग तो आप यूज करोगे, आप कोई एक क्राइटेरिया बना लेती हो. तो कन्वीनियंस मैं उस सेंस में कह रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं किसी कल्चर को, स्पेसिफिक कल्चर को कर रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ, एथनोग्राफिक कर रही हूँ, तो मुझे जो कुछ नोमेड्स जो लाहौर के अंदर मुझे अवेलेबल थे, मैंने आई कलेक्टेड डाटा फ्रॉम देम. दैट वाज ऑन माय कन्वीनियंट बेसिस कि मैं लाहौर में रहती हूँ और मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूँ. लेकिन जो अगर एक्चुअल इसके एसेंस देखनी है तो डेफिनेटली मुझे तो मूव ऑन फिर जो है वो डिफरेंट एरियाज में करना पड़ेगा. मेरा उस कॉन्टेस्ट में था कि आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हो क्योंकि आपको जो डाटा है वो ज्यादा आपको खुद जाके डाटा उनसे कलेक्ट करना पड़ता है इन अ शेप ऑफ इंटरव्यूज, इन अ शेप ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो एट दैट स्टेज you can use the convenient sampling technique where it is not difficult for the researcher to collect the data. I think this was a good reply, and Dr. Shahida is also, Sadia is also saying that it's great reply.
No doubt, convenience sampling is a weak sampling, but as you were mentioning that if nothing is available, you can go for this also. Yeah. So, any other questions? There was a question in the beginning that was from Dr. Almas. So maybe I'll unmute you so you can ask the question which you had asked. Okay, Assalamualaikum. It's Dr. Mas here, Dr. Fasiha. It's a good presentation, but can we add another thing that you answer for the last question? First, like criteria, convenient, you are talking about the convenient sampling with that, but it, for my perception and my practices, it's called the criterion. Convenient mean to say that you just collect data from any person. Conveniently, that person is available. But for the Yes. qualitative, it's more specific that he or she must fit in with the criteria as well. So qualitative study, we use the word criteria as compared to convenient. So that's the different terminology that we added for that purpose. Okay, And my question is that being like researcher, we use different techniques to ensure the credibility and authenticity. That how we being evaluator, or how we say that results are credible, are authentic, that you are collected. What is the major like any tip that being reader I can ensure that researcher have collect the authentic results? Okay, Is it thank you any so much. tool? Is it anything that is we can highlight from that? We can add that on a paper, get that evaluator or journal editor and come to the point that, okay, fine, it's really authentic results. That I am from the quantitative research, and now we are facing that the journals editor need the SPSS file as well. They need the metadata as well. So can you give us any tip that will be helpful for us? Thank you so much. Okay, thank you so much, Dr. Almas. Thank you so much for the feedback. Okay, first of all, let me tell you one thing. I have also mentioned the purposive sampling. In a purposive sampling, you set a specific criteria. I have mentioned earlier, you set a specific criteria कि आपके participant का क्या specific background हो, क्या specific criteria हो, on the basis of what criteria you are going to take that specific people as a participant in your research. You are taking the participant only at convenient basis कि अगर वो available है, लेकिन after that you set specific criteria. और जब आप purposive sampling लेते ही under criteria है, उसके अंदर आप एक different criteria बना देते हैं purposive sampling में एक specific purpose का. और secondly आपने मुझे कहा कि डाटा किस तरह से क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, तो क्योंकि हम जो है एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डाटा लेते हैं, डाटा हमारे पास बहुत इन डेप्थ होता है, रिच डाटा होता है, एक्चुअल सिटिंग में डाटा होता है. और मैंने इसमें एक और चीज भी मेंशन की थी कि आप जो कोड्स बीइंग अ रिसर्चर, जो आप कोड जनरेट करते हो, यू शेयर्ड विद योर को रिसर्चर, यू शेयर्ड विद योर सुपरवाइजर. आपके पास जो इतनी प्रोलॉन्ग सिटिंग में आप, और I have used another word, that is the triangulation. You're not collecting the data from a single source. You are using more than one source for the collection of the same data. For example, मैंने एक ही data पे एक specific topic पे I took the interviews, और मैंने same ही एक observation list बना ली, तो उसको cross verify कर रहे हैं, either what the people they were saying or what the people were doing, कितना उनकी उसमें जो है आपस में लिंक है, क्या उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, क्या उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं है. जब आप इतना प्रोलॉन्ग डाटा लेते हैं, इन डेप्थ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो क्रेडिबल तो हो जाता है. Thank you very much. I think this was a good answer. And do we have more questions, please? All right, so if there are no questions, so I would like to thank everyone for participating in today's session. And just an announcement, we'll have another session at 11:15. So you have a break, water break or whatever you call it. And then we will have another session, and that is a
quantitative research methods, and we will particularly talk about a contemporary data analysis technique, that is the MOS. But taking an opportunity, I would like to thank Dr. Fasiha Altaf for conducting a wonderful session. And I was looking at that the selection of the content was excellent, and her explanation was also very good. And she also responded to the questions very well. And I hope everybody has enjoyed it, liked it, and taken something from here. So thank you very much. We will rejoin at 11:15. You can stay, or you can mute, or you can go and come back, whatever you feel like doing. You can use the same link, and then you can join us once again for the next session at 11:15. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Thank you. Thank you.